Hello, am I audible? Hello, Subhasini, am I audible? So yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Just a minute. Few of the candidates they are coming. Hmm. रोहित, कल तुम रात में फोन किया था, क्या बोलना चाह रहे थे? बोलो तो रोहित। रोहित कुमार। अ, हाँ सर। सर वो पूछ रहे थे कि हम लोग का जो वाइवा होगा उसमें फर्स्ट सेमेस्टर का भी कराएगा। हाँ, फर्स्ट सेमिस्टर से ही वाइवा होगा ना। फर्स्ट सेमिस्टर का लैब का वाइवा होगा, है ना? जैसा एचओडी ओके सर सर। बोले थे, लैब का वाइवा होगा। तो फर्स्ट सेमिस्टर का ही जो लैब रिलेटेड जो क्वेश्चन अराइज होगा वही सब आएगा, और क्या। और थ्योरी से भी पूछा जा सकता है। सर हम लोग का लैब तो अभी तक एक ही सिर्फ हुआ है, तो सिर्फ उसी से रिलेटेड आएगा। थ्योरी तो पढ़े हो ना जी। अब एक ही हाँ एक्सपेरिमेंट सर, हुआ थ्योरी है, वगैरह तो है। थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें क्या है। ओके सर, ओके। लैब अगर पूरा नहीं हो पाया है, कैसे होगा? कितना दिन खुला था बताओ? एक लैब करने में दो हाँ तीन सर। क्लास लग जा रहा है। हाँ, तो पॉसिबल नहीं ना है। ओके सर। जो हम लोग को थ्योरी लेना है तो थ्योरी क्यों पढ़ाया जा रहा है उसका? अभी जो रिमीडियल एमसी एप्टीट्यूड है उसका क्या मतलब है कि हम उसमें वही सब चीज को जो है डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा ना? यस सर। तो यही सब है, और कोई बात नहीं है, हो जाएगा। उसका तुम लोग ये मत लो, टेंशन ज़्यादा मत लो। थोड़ा बहुत भाई बात जो हम फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा रहे हैं अभी, फिर से जो रिपीट हो रहा है, ये सब चीज़ को दिमाग में रखो, ताकि वाइवा में कुछ बोल पाए, है ना? अदरवाइज बोलेंगे हाँ ठीक है, यूनिट और डायमेंशन ये सब नहीं बोल पाओगे, इसका मतलब क्या है? यू डोंट नो नथिंग, इसका मतलब यही होता है। वो सब थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ओके, नाउ चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो सर। हाँ सुहासनी बोलो। सर ओ आपका जस्ट वॉइस मिनट, थोड़ा जस्ट लो मिनट। आ रहा है। हाँ वेट कर, जस्ट जस्ट। हाँ, आज सिर्फ जो है इलेक्ट्रिकल, सीएससी और ईसी, ये तीन ब्रांच के ही बच्चे इसमें इन करेंगे। अब मैकेनिकल सिविल को आज आने का जरूरत नहीं है, जो आए हैं वो निकल जाओ। सिर्फ इलेक्ट्रिकल, सीएससी और ईसीई, इसी का बच्चा इसमें रहेगा। सबको आने का जरूरत नहीं है। जिनका जो क्लास है रूटीन देख करके आओ। सिर्फ लिंक मिल जाता है, लिंक तो हम मेल से भेजते हैं, लेकिन मनोज सर शायद शेयर कर देते हैं, ठीक है? तो व्हाट्सएप में तो लिंक जिसका है उसमें मनोज सर का देखना लिखा रहता है। कल मेरा उनसे बातचीत हुआ इस मैटर को लेकर के, वो बोले हैं कि हम लिख लिख करके भेजते हैं कि इस क्लास का ही बच्चा अभी आएगा, तो उसको देख करके तुम लोग फॉलो करो और तब फिर आओ। ऐसे सब कोई आ जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। चलो आज अभी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग पिछला क्लास में भी इसको बताया गया था, कॉम्पटन इफेक्ट को। कुछ पार्ट हुआ था, पूरा नहीं हो पाया था सीएससी इसी वाले लोग का। तो इस पार्ट को आज हम पूरा करके कंप्लीट करेंगे, कॉम्पटन इफेक्ट का। हो सकता है कि इसके बाद फिर एक क्लास लेंगे। आ, अगर करंट मेरे यहाँ करंट अभी नहीं है ना? अगर आ गया तो ले सकते हैं, अदरवाइज एक 20 में जरूर लेंगे क्लास। तो कॉम्पटन सर इफेक्ट एक बीस में मैथ्स का क्लास है। है। सर 120 में मैथ्स का क्लास है दिनबंधु सर का। लैब का आज तो रूटीन में कुछ नहीं है। बट सर सुबह में दिनबंधु सर हम लोग का क्लास नहीं लिया था मैथ्स का, तो वो बोले कि वो 120 में लेंगे। करेंगे तो कहाँ से चलेगा बताओ, हम लोग कहाँ से क्लास लेंगे? ठीक है, इसके बाद ही क्लास ले लेंगे। कॉम्पटन इसी ओके लिंक सर। में जाएगा। ये क्या नाम है, इसी लिंक को आगे हम ये करेंगे, अपग्रेड करेंगे, ठीक है? तो चलो, कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? स्टेटमेंट व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ, अब डायग्राम को देखो, पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये डायग्राम था, इस डायग्राम के आधार पर हम लोग प्रोफेसर ए एच कॉम्पटन ने
इसको डिस्कवर किया, कब किया? 1921 में। तो उनका स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेसर ए एच कॉम्पटन इज, when a monochromatic beam of high frequency radiation, light नहीं बोलेंगे, when a monochromatic beam of high frequency like X-ray or gamma ray is scattered by a substance, yeah, electron. The scattered radiation contain the radiation of lower frequency as well as greater wavelength along with the radiation of unchained wavelength of or frequency. ये स्टेटमेंट दिया हुआ था। अब उस स्टेटमेंट के आधार पर ये देखो स्टेटमेंट दिया हुआ, पहले भी तुम लोग इसको याद किए हो, ठीक है, नहीं याद किए हो तो याद करो। अब इस डायग्राम को अब समझा रहे हैं, क्लियर कट समझो। ये हमारा इंसिडेंट फोटोन है। इंसिडेंट फोटोन देखो यहाँ ये एक्स एक्सिस पर ये मूव कर रहा है और वाई एक्सिस का और एक्स एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लेस है। एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस एंड द इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट कंडीशन में। अब when a photon this photon move with energy h में होता है, photon move with the velocity of light c possess and it possess momentum h mu divided by c momentum, and this photon obey the laws of conservation of energy and momentum when they strike with the electrons by the scattering substance. अब अभी यहाँ मेरा फोटोन इंटरेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन से, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट कंडीशन में है, ये बिफोर कोलिशन। अब जब यहाँ इंटरसेक्ट किया, कोलाइड किया, स्ट्राइक किया, व्हेन द फोटोन स्ट्राइक विद द इलेक्ट्रॉन, आफ्टर this figure will generate, means here the photon, scattered photon is moving along this direction, and this scattered photon have, means electron have velocity v after collision. This electron before collision electron is in the rest condition. After collision the electron have a velocity v, and this electron moves in the downward direction. Downward direction means minus y axis. So the phenomena of scattering is due to collision between two particles, photon of incident radiation and electron of scattering substance. Photon of incident radiation and electron of scattering substance. Now, if a photon of energy h mu collide with this particle, the free electrons, of the scattering substance is at rest, so this photon transfer their energy to the electron. जब ये टकराया तो ये क्या कर रहा है, अपना एनर्जी को ये ट्रांसफर कर रहा है फोटोन इलेक्ट्रॉन में, एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ऑल द एनर्जी। आफ्टर दैट ड्यू टू दिस energy accepted by the electrons gains kinetic energy. It means kinetic energy, it means it has some velocity. After striking with the photon and the electron takes all the energy of the photon, and so that electron have kinetic energy. It means kinetic energy means electrons have a velocity v. Yes, we have shown this figure here v. Electron has a velocity v. So
after collision, after collision, after this figure shows the diagram of after collision of photon and electron. It makes an angle theta here, theta and phi. Phi is the angle between the scattered photon and the x-axis, and here theta, ये theta होगा यहाँ पर. Theta is the angle between the recoil electrode and the x-axis. So, according to both these diagrams, Compton assumptions, Compton mind arise three conjunctions. First is the Compton. It is the result of interaction of a individual photon and a free electron at a rest. First assumption of Compton is the interaction of a individual photon and free electron at rest. ये उसका assumption है first point. Second point है the collision is relativistic and elastic. And third point है this law, this whole process obey the laws of conservation of linear momentum and energy. Linear momentum law को ये फॉलो कर रहा है. पहला क्या है कि इंटरेक्शन ऑफ ये सिंगल फोटोन का फ्री इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पोजीशन में है तो जो इसका इंटरेक्शन पॉइंट हो रहा है, ये कोलाइड कर रहा है, कॉम्पटन बोल रहा है ये इसका रिजल्ट शो करेगा. सेकेंड पॉइंट क्या है कि द कोलिजन इज रिलेटिविस्टिक एंड इलास्टिक. और थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये पूरा प्रोसेस जो है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फॉलो कर रहा है. ये देयर आर थ्री assumptions given by the Compton. These are the three assumptions. In short notes, university question may ask what are the assumptions of Compton effect. In that case, you have write all these 3 points. 3 points. Assumptions of Compton effect. According to this diagram, at that time, you must write this diagram also along with this assumption 3 points. First, you have draw this diagram and then write all these 3 assumptions. Now, before collision, what happened? Energy before collision, we may say that energy of this photon is h mu and energy of electron is equal to m naught c square. Energy first we can write energy of incident photon, energy of electron, then momentum of incident photon, then momentum of electron. So first we say that energy of incident photon is given here h mu, and the energy of electron is equal to m naught square. M naught square we have write because we know that m naught is the rest mass of the electron. Rest mass of the electron can be written as m naught. Every time we can write when the electron is in rest condition, that it will be written as m naught. M0 means m naught. Now, we have told about energy of incident photon and electron. After that, we have again told about momentum of incident photon. Momentum of incident photon is equal to h mu divided by c. ये पहले ही बोले हैं स्टेटमेंट में, h mu divided by c. Now, momentum of electron is equal to 0. Momentum of electron is equal to 0 because here electron has no velocity. After collision with the incident photon, electron gain its energy and it create
some velocity. So first in figure A, there is no velocity in this electron. It means momentum is equal to 0. Means we know that P is equal to m into v. P means momentum. Momentum is equal to m into v. So here mass is suppose m and v is equal to 0. So the momentum will be 0. The momentum of the electron is equal to 0. This is the conditions uh, before collision of uh, uh, photon along with the electron. Now, again, in this second figure, according to this figure, again, we are talking about energy of this scattered photon and energy of this recoiled electron. After that, momentum of, we have told about momentum of scattered photon and momentum of this recoiled electron. So first, we have discussed about scattered photon, energy of scattered photon and energy of electron, recoil electron. So energy of scattered photon we can write h mu dash divided by c. Here, uh, in this case, means in figure 1, we have told that energy of incident photon is h mu by c. So after collision, energy of this scattered photon, here incident photon, after collision, scattered photon, the energy of scattered photon is h mu divided by c, h mu dash divided by c, and energy of this electron is equal to mc square, mc square. M be the mass of the electron and c be the velocity of the electron. After after striking with the photon and electron gain all the energy of the photon and it acquires a velocity v or velocity c. It may be c. So in this case, the energy of electron is equal to mc square. After collision, energy of electron is equal to mc square. So next, now we have told about momentum of this scattered photon. Momentum of this scattered photon. So momentum, energy of the scattered photon is h mu dash. So momentum of scattered photon is h mu dash divided by c, and momentum of this recoiled electron is equal to mv. Sorry. C is equal to m into v. mv. So before collision, we have achieved all these data parameters. After collision, again, we have achieved all these 4 parameters. Energy of scattered photon, energy of electron, momentum of the scattered photon, and momentum of the recoiled electron. After getting all these data before collision and after collision, we have discussed about uh, energy of the system before and after collision, energy of whole system. After getting all this data of before collision and after collision, we have discussed about energy of whole system. In this parameter, we are getting individual data of incident photon, energy of electron, like this. After getting all these data, we are enlarge the process, enlarge the nodes. Means we have first we have told about energy of the system before collision, energy of the system before collision. So before collision, energy of the system means energy of the incident photon plus energy of electron before collision. When we talk about only energy of the system, then we are taking energy of the incident photon plus energy of the electron. So here
energy of the proton is h mu. So here we can write h mu plus energy of the yeah, energy of the electron is here given as m naught c square. So h mu plus m naught c square is the energy of the system before collision. Now, energy of the system after collision. In this case, here the parameters of after collision are given here. Energy of the scattered photon is h mu dash and energy of the electron is mc square. Now, adding these two parameters means energy of the scattered photon plus energy of the electron is the total energy of the system after collision is equal to total energy of the after collision. So it can be written as like this h mu dash plus m naught square. So we know that according to the principle of conservation of energy, that the energy of the system before collision must be equal to the energy of the system after collision. ये होता है according to the principle of conservation of momentum, energy, actually, the energy of the system before collision must be equal to the energy of the system after collision. It may be so it can be written as here energy of the system before collision is equal to h mu plus m naught c square is equal to energy of the system after collision is equal to h mu dash plus m c square. So after solving this equation 1, we are getting mc square is equal to h mu minus h mu dash plus m naught c square. Equation 2. So according to this diagram, we can say that the principle of conservation of linear momentum along and perpendicular to the direction of the incident photon. Means according to the principle of conservation of linear momentum along and perpendicular to the direction of incident photon, that is along x-axis and y-axis. So here h mu divided by c, here h mu divided by c is equal to h mu dash c divided by cos phi plus mb cos theta. When we are taking along x-axis, means here in this diagram, when we are talking about this x-axis, so the scattered photon makes an angle theta. So we are getting cos phi, and here recoil electron makes an angle v. So it can be written as v cos theta and v cos theta. So in this x-axis, we can write h mu here, h mu plus h mu Kumar Gupta. Oh, this is h mu divided by c plus 0. ये कहां से आया h mu divided by c? आवाज जा रही है ना? हेलो Yes, Yes, sir. sir. आ रही सर. अच्छा, ये कहां से आया h mu divided by c? यहाँ देख, मोमेंटम ऑफ द इंसिडेंट फोटोन. एक मिनट, जस्ट a मिनट, हम आ रहे तुरंत 2 सेकंड में आ रहे. फैन बंद. एच म्यू डिवाइडेड बाई सी, ये आया कहां से? तो ये एच म्यू सॉरी एनर्जी, हम लोग क्या जान रहे हैं? मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन बिफोर कोलिशन में हमारा मिला क्या है? एच म्यू डिवाइडेड बाई सी, और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.
तो इंसिडेंट फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों का मोमेंटम को ऐड किया, ये पार्ट आया। इज इक्वल टू, आफ्टर कोलेशन में मेरा मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, यहाँ चूंकि हम मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन ले रहे हैं, तो यहाँ उसी तरह मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन प्लस मोमेंटम ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, ये लेंगे। मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन प्लस ये इलेक्ट्रॉन का है मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, एंगल बना रहा मेरा cos फाई, प्लस मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन, उसी तरह cos थीटा। तो ये किस डायरेक्शन में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स एक्सिस। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी कैन राइट MVC, उस दिन ये चीज बोले हुए थे क्लास, MVC cos थीटा इज इक्वल टू h म्यू माइनस h म्यू डेस cos फाई, ये आ जाएगा इक्वेशन 3, करके देख लोगे। When we are talking about y-axis, in that case, in place of cos theta, we can write sin phi, cos phi की जगह sin phi लेंगे जब हम y-axis का बात बोल रहे हैं। इस डायग्राम में y-axis के साथ जब बोल रहे हैं, तो यहाँ मेरा बन जाएगा sin थीटा, इधर भी sin थीटा, तो यहाँ sin phi और sin थीटा, ये पार्ट आ गया sin phi sin थीटा। अब हम लोग y एक्सिस में ये 0 आ गया, इज इक्वल टू h म्यू sin phi, ये माइनस नीचे जा रहा है ना mb, तो माइनस y एक्सिस में है तो mb sin थीटा, इसलिए यहाँ माइनस है। और 0 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया गया तो एलसीएम लिए c h म्यू डेस sin phi माइनस mbc sin थीटा, और c इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो रेस्ट पार्ट मेरा क्या बच रहा है, ये h म्यू डेस sin phi माइनस mbc sin थीटा। तो mbc sin थीटा इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखे और इस पार्ट को राइट हैंड साइड में, h म्यू डेस sin phi, इक्वेशन 4। नाउ स्क्वायरिंग, इस पार्ट को समझोगे अभी जो बोल रहे हैं, स्क्वायरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, both these are, first we have square both these equation and after that adding these two equations. So ये m v square c square cos square theta. First we are talking about left hand side of both these equations. So here m square v square c square cos square theta plus m square v square c square sin square theta. Now both left hand side of both the equations are adding. First we have squaring both the equations of left hand side, and after squaring the equation they are adding. Adding means m square v square c square cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So 1 into m square v square c square theta is equal to kitna, m square v square c square is equal to, here in equation 3, here h mu right hand side of equation 3 is given as h mu minus h mu dash cos phi, then it will be whole square. First we have squared the right hand side of equation 3, squaring the equation 3 after that and 4 means here equation 4 in right hand side of this equation given as h mu dash sin phi. So here we can write h mu dash sin phi whole square. After that adding means after squaring then adding. After squaring this part will come plus adding means this part plus, and equation 4 right hand side in equation 4 this part is given here, so we can write here this part. After that solving these equations, m square v square c square is equal to a minus अपग्रेड कर रहे हैं इस ये को टाइम पीरियड को, ठीक है, अपग्रेड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू होगा। h स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a square minus 2ab plus b square. So see here, a square, a means h mu whole square, so that it can be written as h square mu minus 2ab, 2 into h mu, and b part is h mu dash cos phi. So here we can write h mu into h mu dash cos phi plus b square. B square means h mu dash cos phi, h mu dash h square mu dash square cos square phi. Yes, plus this part h square mu dash square sin square phi. Yes. So in this equation here given as sin square, here यहाँ पर क्या होगा, cos square लिखना भूल गए, cos phi हो गया, सॉरी ये ठीक है, ये ठीक है, यहाँ here cos square phi plus sin square phi is equal to 1, is equal to 1. So rest part is क्या हो जाएगा, h square mu dash square. तो यहाँ पर हम m square b square c square is equal to h square, ये h square, यहाँ जो रेस्ट पार्ट बच रहा है उस पार्ट को हम यहाँ लिख दिए हैं म्यू स्क्वायर माइनस 2h म्यू 2h, ये h तो मेरा h इंटू h स्क्वायर, ये आ गया कॉमन, यहाँ बच रहा म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू इंटू दिस म्यू डेज cos phi plus here rest part is mu dash square. So this is the equation 5. Now after getting this equation, squaring the equation 2. So equation 2 is given here, means mc square is equal to h mu minus h mu dash plus m naught c square. So in this equation 2 मीन्स इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो m स्क्वायर c टू दी पावर 4 और इस पार्ट का राइट हैंड साइड का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया स्क्वायरिंग इक्वेशन 2, वी हैव m स्क्वायर c टू दी पावर 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर will be taken as common, mu square plus mu dash square minus 2 u mu dash a plus b, a minus b whole square, a square plus 2ab plus a square minus 2ab plus b square, यहाँ का पार्ट को आ गया इक्वेशन 2 को, ये होल स्क्वायर के हैं तो प्लस प्लस ये पार्ट, इक्वेशन 2 को जब स्क्वायर किए तो ये पार्ट आ गया, तो इक्वेशन 6. नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 6, 5 फ्रॉम 6, तो यहाँ मेरा 6 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, m स्क्वायर c टू दी पावर 4 माइनस, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस, यहाँ 5 में क्या है, m स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये पार्ट को लिख दिए, इज इक्वल टू इस पार्ट को सॉल्व किया गया, तो यहाँ देखो मेरा जो पार्ट कटेगा वो कट करके ये मेरा लास्ट पार्ट आ रहा है, हम इसको किए हुए थे, ये 2h म्यू नॉट c स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डेज प्लस m नॉट c स्क्वायर, m नॉट स्क्वायर c टू दी पावर 4, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर इतना पार्ट आया। पहले आप बताओ यहाँ तक इक्वेशन 6 7 तक किसी को दिक्कत आ रहा है कि फिर रिपीट करेंगे, ये पूछेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में। हेलो हेलो, यस सर, यस सर, ठीक है, बस नहीं तुम लोग को कहीं कोई दिक्कत, No, sir. नो, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसके जस्ट इसके बाद हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई हैव टू स्टार्ट, है ना, विच इज गिवन इन योर सिलेबस, दैट मींस मॉड्यूल 3 इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मॉड्यूल 3 इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वी नो दैट, हम लोग जानते ये पार्ट आएगा, ये हम उस समय बताएंगे, m इज इक्वल टू, अभी सिर्फ समझ लो, m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ये m और m नॉट कहाँ से आ रहा है ना, ये चीज हम लोग उस समय बताया जाएगा, ये m कहाँ से है, m नॉट क्यों आया, ठीक है, ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये वर्ड आएगा बार बार, और आगे भी हम लोग का जो भी ब्रांच पेपर में भी ये सब वर्ड का हम लोग को ये सब फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा हर केस में,
उसमें कोई भी टीचर ये m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये कोई नहीं बताएगा कि ये कहाँ से आया। ये फिजिक्स में अभी ही मॉड्यूल 3 से ही ये हम लोग को समझना होगा। तो जब हम लोग मॉड्यूल 3 मीन्स अभी मॉड्यूल 1 चल रहा है, मॉड्यूल 2 अनुसर करेंगे, मॉड्यूल 3 के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, पढ़ाया जाएगा, तब इस पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू थियोरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, वी नो दैट m इज इक्वल टू दिस, so left hand side of equation 7 can be written as left hand side of equation 7 means m square c to the power 4 minus m square b square c square is given in the left hand side of equation 7, and the value of m is putting on this equation. So after putting the value of m in place of this, so we can write m square means m naught square divided by root, ये क्या root under 1 minus b square divided by c square whole square. So after solving this whole is this root under, ये root under क्या हो जाएगा यहाँ से, will be removed from this place into here m naught c square है, sorry m naught c to the power 4, here c to the power 4, so here we can write c to the power 4 minus m square means again we can write m naught square divided by 1 minus b square by c square into this part means b square is into c square is written here. On putting the value of m, this m is placed on this in this both the places here and here. So the resultant of this part is this. After solving this equation, after कैसे हम लोग solve कर रहे हैं, m square c to the power 4 minus b square c square is equal to here m naught c square into c to the power 4, m naught c square into c to the power 4, both are given are taken as a common. So rest part is 1 by 1 minus b square divided by c square minus here. हेलो हाँ हेलो, हेलो सर, बोल रहे सर इसमें फिर इसी लिंक में ज्वाइन होना है सर, जोर से बोलो। इसी लिंक में ज्वाइन होना है सर, क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा इसीलिए पूछ रहे हैं। टाइम खत्म होगा फिर इसी लिंक में ज्वाइन करना है। ओके सर, यही पूछ अपग्रेड रहे हम थे। कर दिए हैं, ठीक है, इसी लिंक में ज्वाइन करोगे फिर से, ओके ठीक है सर। ठीक है। अभी बहुत पढ़ाना है इसमें, कॉम्पटन इफेक्ट आज हमको खत्म करना है, ये पार्ट वेरिफिकेशन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसके बाद आएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 कॉमन गया, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर माइनस ये माइनस यहाँ आया, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व किए, यहाँ c स्क्वायर है, यहाँ c टू द पावर 4 लिए हैं, तो v स्क्वायर बाय c स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। Now m square c to the power 4 minus m square v square c square is equal to m naught square c to the power 4, and rest part of this is 1 minus v square by c square divided by 1 minus v square by c square. After solving this equation, here the cancellation part of the equation is this, means 1 minus v square by c square divided by 1 minus v square by c square will be cancelled. So rest part is m square c to the power 4 minus m square v square c square is equal to here rest part is m naught square c to the power 4. This is equation 8. Now equating in equation 8 and equation 7.